So welcome back after lunch. Participants, now we have one more important lecture, that is Waste to Wealth Towards Sustainable Agriculture, which will be delivered by Mr. Muhammad AMIR Khan. He is a CEO and founder of Waste to Wealth, AMIR and Agri-Biotech Solutions. Sir is also Clinton University Fellow for Waste Management for Clinton University. So he has a very rich experience in waste management. So I request sir to kindly come and deliver a lecture. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Welcome and a very good afternoon to all of you. Before we start this session, I would like all of you to have a look at the quote. Opportunity always favors a prepared mind. Take it as a quote and take it as a hint. I have been given the topic of waste to wealth. Next slide. I have been given this topic, and more importantly to my interest, waste to wealth, agri-food waste, circular economy and sustainable development goals, a precursor to entrepreneurship. During the course of next 1 hour, I would request your patience to allow me to go through the contents of this presentation while we try to develop new horizons of thought, precursors to entrepreneurship and sustainable agricultural practices. We'll be going to the beginning of this presentation. We'll be going to the introductory part of this, then understand the titles, conventional practices of waste management as in agri and food waste, its challenges and drawbacks, the scientific methodology which can help us to do something better, and ultimately give a precursor to the entrepreneurship, its opportunities and challenges. And towards the concluding part, we'll mainly be focusing on waste management industry, waste management as an industry, organic inputs industry, which includes biofertilizers, biopesticides, biofortification, etc. And to the last part, we'll be offering something to all of you. Thank you. I didn't introduce myself to all of you. My name is Muhammad AMIR Khan. I am the CEO and founder of Waste to Wealth, AMIR and Agri-Biotech Solutions, a startup which I have dreamed of during my college days, which ultimately turned out to be my Clinton University project, which has already crafted a way for itself in the United States, South Africa and Kashmir to our most happiness. I'm a Clinton University Fellow for Waste Management by qualification. I'm a mechanical engineer, a master's in social work, a postgraduate diploma in intellectual property rights and a Clinton University graduate. I have won first prize in BRIC Idea Explosion in the year 2020, which was themed on clean technologies. I applied a patent for one of my mechanical inventions and have
published a paper in an international research journal with an impact factor of 8.2. And currently, I'm working as a part-time mentor at the Clinton Global Initiative University. I hope you all will have a keen interest towards listening to me for the next 1 hour, so that we can actually get some inputs as to what our career should look like in the coming future. First of all, I'd like to let you understand the titles, and please don't only go after the words. Try to internalize the graphics as well. Understanding the titles, there are 4 words which are at the intersection of each other. And to my good hope, I assume esteemed scholars and students in front of me would definitely understand what it means to be at an intersection. I will try to explain a little bit more. When we talk about waste management and converting waste into wealth, it's not everybody's cup of tea, to be very frank, because it is something which scholars, scientists, industrialists, global technologists, technocrats have tried to solve, but to date remains unsolved. But to our good news, it's turning out to be the new data, the new oil, the new gold mine, which needs to be tapped and turned into treasure or wealth. It will actually help us to craft a way towards a circular economy. Before we try to understand that, I'd like to have an idea about my audience, as in which sectors. I'll take the name of a few sectors. Please raise a hand, as in which sectors you're associated with. Anyone waste management? Agribusiness? Biofertilizers? Not just you are dealing, but maybe you will like to try in the coming future. Agribusiness, nobody. Oh, you. Okay. Biofertilizers? Vermicompost or compost? No? Waste Okay. management, Waste management? Great. Any technological inputs, as in somebody has designed or trying to design a new technology or invented technology? No? All right. Any type of entrepreneurship in the agriculture sector. Is anybody like thinking to start a business venture in agriculture in the next coming future? Not yet? All academicians? All right. No issues. It doesn't dishearten me, because I know it's academicians who pave a way for technology, for businessmen, for industries, or anything else for that matter. It'll take me a little bit of time to help you internalize with these words and understand the meaning of this intersection. Before circular economy, anybody do you have an idea about linear economy? Anybody, please? Just to give me a couple of more thoughts. Yes, please. What is linear economy? Linear economy, we just produce things and they are put to an end after the use, and there is we don't recycle it, we don't reuse it. Great. Anybody else? Anything to addition? Mostly By using throws. use and throw. Okay, casually you can say yes, the meaning is altogether the same. Okay, now you know what linear economy actually means. You should have an idea what circular economy should mean. Anybody getting any idea in the mind? Use, recycle. 3 hours. 3 hours. 3 hours. Basic of it, 3 hours. Anything else? Anything new, anything unique, anything out of books? Okay.
Circular economy actually is a concept which goes back to the roots of human existence, to be frank about it. If we go to our own existence, we come from somewhere, we ultimately go to somewhere, and it's always the same place. खाक से बने खाक में ही जाना. That is something which circular economy actually tries to tell us about. Circular economy is something opposite to linear economy. As in, if we produce a product, it's used. After use, it should be reused, as in tears. It should be recycled. It should be put back into the economy so that it does not benefit us only once, but multiple times. And it helps us to actually create a low intensifying effect on this planet so that we can leave it in such a position that it does not exhaust by serving us, but it helps our generations to serve or to survive. And waste management, particularly agri and food waste, is something which has not only created challenges, but is becoming the topic of discussion for global forums, governments, institutions as well. And let me tell you, in these times, if anybody of you feels any interest in waste management or converting waste into something useful, it's a gold mine, believe me. As you all must be knowing that after the Industrial Revolution, the very first Industrial Revolution, we have seen drastic changes in our environment, in our climatic conditions. अगर हम कश्मीर की बात करें, I'm 28, and in the last 28 years, I think I have seen climates of every type. I have traveled across India, some Southeast Asian countries, including the United States. But I have seen that really there has been a drastic change in the climatic conditions and the way people try to survive with it. But unfortunately, till date, not enough action is done on ground. Not enough initiatives are taken on ground to make this planet actually a sustainable one. And I hope today's session helps us to take some action and try to save this very mother planet of ours. And I was talking about the intersection of these four words, from waste to wealth to circular economy, leading to entrepreneurship, and ultimately sustainable development goals. Sustainable development goals, how many of you are familiar or have a fair idea about sustainable development goals? Please raise a hand. Yes. Yes. Please give me 2-3 ideas of what sustainable development goals actually are. It's about no poverty, it's about safe environment. Yes, by the definition itself, what actually it is? Zero hunger, zero poverty, that are the sustainable development goals. To keep resources for our future generation. Alright, something to deal with sustainability. Something which sustains for a long. Transform. Anybody else? Anything else? Transforming the world and the Transforming or trying to transform the world for a sustainable future. to achieve a better future. And Exactly, to achieve a better future, exactly. Do you have a fair idea? Has your mind allowed you to think about something
from last 3 hours which we have been discussing during the last 10 minutes, as in, do you think waste management will lead away towards sustainability? Yes. Do you think circular economy will lead away to sustainability? Yes. Do you think entrepreneurship in these sectors will help us to towards sustainable development goals? And if an audience of 10 to 20 people here are very fair about the idea and are firm about the idea that this will definitely help us to attain sustainable development goals, then what the hell is world doing when they have been saying the same thing for the last 15 years and haven't achieved 50% of it? The timeline for sustainable development goals to be achieved is by the year of 2030. Yes, by the year of 2030, and it's just 7 years ahead of now. These were started in 2015, but this was not started as something fresh or new. This was actually a failure of Millennium Development Goals. When the world understood that we're not going to achieve these goals in the year 2015, they created something as SDGs and enhanced the timeline up to 2030. Now, where does the problem come? The problem actually comes on initiatives on ground. That is why the main focus of this session will be delving into entrepreneurship with respect to sustainable development goals, with respect to circular economy, and with respect to waste management. Otherwise, there's a lot of content to discuss about how we can become entrepreneurs and very successful ones. But here my main focus will be on waste management and circular economy and agri-food waste. Okay, now talking about waste, everybody among us comes through these scenes, maybe in villages, maybe in urban spaces like a smart city like Srinagar, maybe in universities or colleges, maybe on roads, maybe in streets. But what do we actually do with it? The conventional practices which a third world country like us, which a developing economy like us, which a developing mindset like us has done, is the first and the foremost challenge is mixed bins. Nowhere in entire India, there may be a couple of exceptions. I have seen one in Kerala, one in Telangana, Hyderabad, and one in Rajasthan. 2-3 sort of examples you may come around where you will see segregated waste is collected from households and is then treated at the processing facilities. But 99% of the places and the areas, you will see a culture of mixed bins. And everybody must be having an idea what a mixed bin in our kitchen looks like, or in our office looks like. It contains everything from fruit peel-off, vegetable peel-off, kitchen waste, tea waste, polythene, soft drink bottles, plastics, napkins, and stuff like that. And do you have an idea about what actually should happen to this bin, or where does this bin go after we throw it or we hand over to somebody from the municipality or from the rural development department? Has anybody thought till date what should happen to this, or what is happening to it currently? Has anybody, please give me honest feedbacks. Has anybody thought about it as of now? Yes, sir. Yes, what have you thought about it? Please tell me. Sir, I have seen a series from Korea. Okay. They have a different kind of bins. Like one is recyclable, one is like solid waste, liquid waste. They separate it, but in India I have never seen it. So it is. Alright, so has ever a thought come to your mind as in we should do something for this? Yes. On individual level,
Individual level, community level, home level, family level, anything. Individual level, if we segregate the organic waste separately, we can turn it into compost. No, that's okay. I mean, have you ever till date thought about it? Have you tried somewhere? The government has already taken the initiative. We have different types of bins for biodegradable waste, for non-biodegradable waste. So if we are educated people, we can differentiate and we can take the initiative on ourselves. Of course, the government has designed a policy in the year 2016, But no one is following that. which is called Solid Waste Management Rules or Bylaws. And since 2016, 7 years have already crossed. We haven't started yet. That's the problem, which I'm trying to address through my startup, through my company, through this session, through maybe you people, if you delve into entrepreneurship in the near future. So the problem actually is, this bin continues to be looking like same as it was some 10 years before. Even in mostly from where do you people come? Mostly from hostel or Srinagar Street? How many of you are from Srinagar Street? Okay. How many are hostelers? Great. I've been a hostelier for actually. Okay. 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 And how many of you travel up and down? Okay. Okay. So, what my concern is, even in a city like Srinagar, which claims to be the smart city of India, today while I was traveling from home to here, I found a garbage truck which was loaded with, and that was traveling along the Boulevard Road, loaded with every kind of waste in it in the same place, in the same bin, in the same trolley. And believe me, Mr. AMIR is a close friend of mine. One day, while they were floating a tender, for managing dead animals in the street. And I was in Delhi. They have floated a tender of around 6.5 CR. The project was to actually set up an incineration plant. An incineration plant is nothing but something like a furnace where we burn something. And being such a qualified bureaucrat, he had floated a tender to invest around 6.5 crores of rupees of public money into setting up an incineration plant and bring all those dead animals, be it dogs, be it cows, be it sheep, be it anything in Srinagar, to be thrown and burned in that incineration plant. When I came to know about it, because I was dealing with waste management for quite a long now, when I came to know about this, I texted him and I asked, boss, what are you doing, being such a qualified, and an IITian by education. He's from IIT Mandi, Shimla. He's an engineer. IITians are actually claimed to be the most genius people in India. And I asked him the question. His reply was, we just have to spend the money. And that is their task as a bureaucrat. Since that day until this date, I haven't asked him anything about it. But I tried to stop this thing from happening. Tried to intervene. Actually, I actually tried to participate in that tender, just to allow myself to discuss with them in that pre-bid meet. There's a pre-bid meet when we go for tendering. There's a pre-bid meet. Before going for the bids, there's a meeting as in who is interested, who wants to bid for this project, and do we have that technical specification. I didn't have that technical specification at that time to qualify for the tender to be applied. But what I did, I anyway applied. I put some costs in it. I applied just to participate in that pre-bid meeting so that I raise a question with municipal corporation and him face to face, so that I can at least try to stop this from happening. But it ultimately did not work out because he had a compulsion of showing the expenditures which were allotted to him as a commissioner of the municipal corporation Srinagar
he was supposed to show the expenses and revenues or whatever there is in the bureaucratic policy. That's why he did the same. And it was in 2021, yeah, most likely in 2021, and it's 2023. After the G20 happening in Kashmir, after spending so much of hundreds of crores of money on waste management or cleanliness or sanitation, this thing has still not stopped, the mixed bin culture. We have cracked the code. We have a solution for this. I'll discuss that towards the end of the session. So this is the conventional practice what we have been doing, waste management. Second, where we don't have bins, where we don't have municipalities coming with vehicles to our doors, we just throw it away in open spaces. And it mostly happens in villages, from where I come from. Third, the burning of waste. The burning of waste you might have seen. Have you heard about some news in the past month or so about stubble burning? You must have heard, because being agriculturists and academicians of agriculture, you must have heard. How many of you have heard about that? You. Okay. You. What was it actually? What was the issue? So mostly we see that when there is harvesting of the crops, Yes. so they burn the stubble from their fields. And Exactly. Mostly we see from Haryana and Delhi. Haryana, Rajasthan, Punjab, and UP, some areas of UP. Stubble burning. It is such a contentious issue that 5 states of India are actually fighting a legal suit in the Supreme Court of India regarding stubble burning. And what everybody is trying to prove is that we are not guilty, the other state is guilty of it. This state is not guilty, the other state is guilty of it. And nobody has to some good news, some people have designed some solutions. Definitely we'll discuss them towards the second part of the session. But stubble burning is one of the most challenging tasks India is facing. And if somebody of you have a solution about it, then go for it. Try to publish a paper. Try to go through an incubation center. Try to start a venture regarding waste management, or try to get some people around it who will be having sufficient technology or resources so that you can collaborate with them and you can design a solution for this. Believe me, whoever tries to develop a solution for this problem in the next 6 months, a year, or 2 years, or 3 years is going to receive the President's Award for this, for clean technology. And one more practice which we conventionally do is we use it as a fodder for our animals. In villages mostly we do. Ghas jo nikalta hai khetun se, we try to feed our animals through that. But again, this is not the solution, and this is not going to take us even closer to the solution for the next 5 decades. Why is it not the solution, and why it should compel us to think for solutions is because it has some challenges and drawbacks which are very common. I don't need to actually explain you all these things because you are academicians, you know it better than me, and I'm not here to discuss all these things because we actually are focusing on something else, creating a culture of entrepreneurship in our academicians so that they can start working on agriculture and agribusiness and ventures. Carbon emissions, climate change, as I was discussing in the beginning of the session, climate change, greenhouse gas emissions, then global warming, then rising of sea levels. It's all actually related to this something called stubble burning or anything which we burn. Smog. What is smog, by the way? Smoke plus fog is smog, okay. Smog. And during this time in Delhi or in Haryana, I will not be able to travel up to 11, 12 or sometimes up to 1 p.m. in the day because of this. And there are a lot of accidents only because of this. And it has surrounded that region of Haryana, Rajasthan, UP, Punjab and Delhi. Global warming, conflicts, state conflicts, global hunger. If I tell you that global hunger is actually due to
food waste. Can you believe that? Do you think there may be some relation between food waste and global hunger? Anybody please give me some ideas. Data is in front of you. Anybody please. I just want this session to be a bit interactive so that we have a better opportunity of learning from each other and trying to design a solution to some problem which ultimately I am here for. Otherwise, I had no compulsions of traveling 100 kilometers and delivering a lecture here, coming from some other state and delivering a lecture here. Or you people sitting here wasting your couple of hours for listening to me if it does not have a purpose. I want you people to be interactive so that next 1 hour or 45 minutes or whatever is remaining should actually help us in one or the other way. Okay, please. Yeah, give me some ideas about it. How is food waste related to global hunger? So basically, maximum times when we see, if we talk about India, the supply chain management is not completely that developed. For example, when we produce something, during the transit process only it is wasted and it does not reach. I understood. Highlight was the main thing. I understood the rest of the guide. Anything else? This is one of the great points. Yes, please. Anything else? The serving size, the plate, the food we eat. Okay. The servings matter, as we can see in social cultural gatherings or weddings. Great. The large plate size, and then the food is wasted. Yes. Great. That is actually something which is actually banned in Islamic rituals as well. Yes. There are two words that I find very similar to it. They are used very synonymously, but they're not. One is the availability, and that second is the accessibility. Okay, great. So when we talk about availability, it's the production. Okay. I think the world produces more than enough to feed all the population. Great. But Great. most of the people do not have access to that production. Exactly. So that's what I think. Understood. Great. Anything else? Any idea from the gentleman, please? Good idea? Anything? Any ideas? It's actually, according to the United Nations Environment Program, Food Waste Index of 2021. Indexes usually, you will be having an idea about what it means to have an index. Index is an indicator which actually represents the state of something. So, 17% of the global food production is wasted. Related to your point, as in the supply chain management, mismanagement. We have produced it, but it is still wasted. Why? There are a lot of challenges regarding that. 30% of this waste is coming from households. अगर हम भी घर में देखेंगे, I'll talk about myself. We cook for ourselves. We have a culture in our villages. Like I don't know whether this person stays till date or not, but we have it in villages. Like दिन में कोई ना कोई आएगा, maybe a neighbor, yeah, like we share our food. Like किसने अच्छा बनाया, कौन सा association room. Tell us, you will get I think it's universal. Like and in our social life, it's very common. Like in villages, we share. And we usually have excess of it. Excess, E-X-C-E-S-S. We usually cook excess. And even after filling our stomachs with more than what was prescribed for us, what was healthy for us, we end up filling our stomachs with something which ultimately leads to problems. And that is the figure. 43% of this waste is coming from households. 26% from food service, restaurants, hotels, or other gatherings. 13% from retail. See, the problem is basic, and the solution has to be basic. The problem is very basic, and the solution has to be basic. Everything. आपको पता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, we have a complication, हमें कोई issue होगा, खतरनाक सा issue, for example diabetes होगा. Or for that matter, cholesterol hoga, fatty liver hoga, or some other ailments like disc problems hogi, yeah, deviated nasal septum, something like which I am suffering from. I have a nasal septum which is a little bit deviated, which actually leads to Sadabahar nose. Yeah, sinusitis to be the technical term for it, sinusitis. And it happens with anything, like it is such a spontaneous reaction. Dio lagaoge to you'll start sneezing.
जुकाम का it will start, और थोड़ी सी dust होगी तो it will start. You can't even sweep, like clean your room when you have sinusitis or you have this DRS. And ultimately, when I consulted the doctor, he said, "What do you want?" I said, "Various of जुकाम." अब क्या करोगे? It has to be solved. तो उन्होंने बोला, have some lifestyle changes, don't do anything else. If you start doing or treating it medically, you'll have to go for a surgery. And surgery in a tiny organ of the body like nose is something which is disastrous. Okay, so उन्होंने क्या बोला? You'll have to do some lifestyle changes. Avoid fast perfumes, avoid something like dust, and the problem will be solved. And I did the same for last 1 year. Alhamdulillah, for last 1 year, even in this much of cold, I didn't have anything like cold or any other issue regarding my nose. It's just because of a small behavior or lifestyle change. Similarly, अगर disease problem होती है तो we'll again have to go for दवाई काम करती ही नहीं है. Particularly जो कश्मीर की दवाई होगी, it does not work at all. Believe me, because I have handled many patients. My father, my mother, who was having a disc space problem, then we went for treatment to postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGI) Chandigarh, and 15 days we were having physiotherapy and everything was sorted out. वहाँ पे यहाँ पे basic painkiller जो देते हैं ना, that is what is that? Paracetamol. यहाँ तो देते भी हैं तो like dose 650 mg something like that. And that is very basic. Like वहाँ पे disc problem की pain को paracetamol 500 दिया गया, and that was like हमने खाया ही नहीं कभी. During the 15 days of physiotherapy, everything was sorted out. So उन्होंने बोला कि फिर ऐसे करना है, bending avoid करनी है, ये चीजें करनी है, थोड़ी सी वर्जिश करनी है, you'll have to correct your posture and that's all. अगर हम नहीं कर पाते हैं तो we'll have to be continuously taking medicines or going for treatments, wasting a lot of money, ultimately happening nothing on ground. Similarly, there are many problems which needs a basic solution, and this is something which everybody of us can actually solve. Do you think there is something complicated to be done? And particularly in case of you as academicians of agricultural science, of food technology or related fields, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम घर में ये होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, किचन कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग, एवरीबडी कैन डू दिस. चलो ठीक है, वे ज्यादा बन गया तो बन गया, या कभी टेस्ट अच्छा नहीं था, खराब हो गया तो हो गया, बट देयर शुड बी अ सॉल्यूशन. एंड पर्टिकुलरली विद पीपल लाइक यू एंड मी, हम तो एटलीस्ट ये करने चाहिए. See, we can contribute to 17% of, like for example, 43% we can reduce it. चलो 1%, 0.5%, 0.01%. We should start contributing. So, anybody of you, किस को इरादा है आज से start करने का? I know college life, university life, and this age itself is something which keeps us way more busy. But believe me, this is something. उस बिजनेस में अगर 15-20 मिनट इसकी तरफ जाएंगे ना, it will give a lot of satisfaction. I'm not a psychologist, but I have read psychology to a great extent, and I have actually faced the most complicated issues in the 28 years of my life, believe me. But Alhamdulillah, I could manage and handle them very successfully. Very successfully, and only it is only these things, this responsible behavior, the habit of giving, doing some social work, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, it ultimately helps your mental health. Believe me, you try it any time down the line in your life, you will find a lot of mental peace while doing all these things. Any of these things, it will help you a lot. And mental health nowadays is becoming one of the most important issues in global health challenges. So, I am lucky to be actually delivering a lecture in front of you, because I know I just have to give a hint. There are people who will understand it better than myself. That is why there is a main point of attraction which has compelled me to travel 100 kilometers and deliver a lecture here for actually no other purpose. Just this thing, that I will have an audience which will be mature enough, knowledgeable enough, understanding enough to take something from whatever I try to deliver, and they will definitely start
at least thinking on it. So I hope you will send me with a good hope in my mind, inshallah. Okay, and coming back to the lecture, water use inefficiency. ये सारा फूड बनाने में जो ज़ाया होता है, ये बनाने में कितना पानी लगता है? From sowing the seed to washing our hands in the plate, कितना पानी लगता है? A lot. And this is a problem. Even अगर आप देखेंगे in the recent, though I'm not supposed to talk anything regarding political sentiments or political conflicts around the world, but as an example which everybody of us feels as a Muslim, particularly as people from a conflict region like Kashmir. हम देखें ना Palestine में recently जब पानी की ज़रूरत थी, how painful it was to see those people. So it is because water use inefficiency है इंडिया में. Groundwater depletion at all time high, and because of wasting culture, we waste a lot of water, and it ultimately has to be borne by somebody else. किसी को face तो करना पड़ेगा, and that's it. We are lucky, like we people in Kashmir, we are lucky enough. I come from Kulgam, Ahrbal, you might have heard. मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक अहरबल है. But the problem is, like हमारे पास rivers इतने clean. Let me tell you very as my basic example. Like जब हम स्कूल जाते हैं, like in 2005, 4, 3, up to 2008 I was in high school. 2009 I crossed my 10. तब तक 2010 तक, believe me, wallahi, 2010 तक when we used to take a bath, we directly used to go to a river. It was so clean. Even we used to drink that water without any ailments, without any problems. And in the 12th class of our higher secondary, I had a friend. He's currently in London School of Business School. He's pursuing PhD. He just completed PhD in Islamic banking and a great successful businessman. He was one year senior to me. उन्होंने बोला, we were in the same higher secondary. उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, pH test. We were doing a pH test in the lab. Lab में टेस्ट करते हैं. मैं बोला किस चीज़ का? बोला पानी का, जो यहाँ से फ्लो हो रहा है. बोला ठीक है. हमने लेक्चरर को इंसिस्ट किया, सर हम ये ऐसे करना है. Usually in those days आपको अलाउ नहीं किया, अरे क्या कर रहे हो, ये है लैब खराब हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा. Nowadays there are ample opportunities, but उन दिनों लिमिटेड थी. 2010 में, is 13 years back. तो सर ने बोला anyway we convinced him. तो हमने बोला सर हम टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे इस वाटर लेवल, ये जो वाटर है ये कैसा है. बिलीव मी, जो मिनरल वाटर होता है ना, उससे साफ था, उससे बेटर था, उससे साफ था, एंड उससे हेल्दी था. लेकिन आज द सेम रिवर इज फ्लोइंग alternate to my house from last 5 years. I haven't touched that even for making wuzu once. ऐसा भी नहीं करते, because nowadays there's a lot of environmental problem, and it's actually because of our irresponsible behavior. ये सब हमारी वजह से हो रहा है. So please, I'm pleading before you, please start behaving responsibly as conscious citizens of this country. And और ये जो this is called, ये जो गुम्मन, actually गुम्मन जो है ना, गुम्मन we usually है ना, आपने सुना होगा, it's a Quranic term actually. Guman is not something like attitude or something, किसी के साथ बात नहीं करना. Guman is like तकब्बुर is like, yeah, what actually it is कि अल्लाह ने कुछ दिया है, अल्लाह ने कुछ दिया है ना, तो I take it very easily, very casually. ठीक है, मैं खाना खाता हूँ सऊदी के लोगों की तरह, इतना सारा रखो सामने, कोई देखना चाहे कि हाँ इनका शाही स्टाइल है खाने का. Ultimately they end up wasting 80% of it. वो just दिखाने के लिए होता है. They are not taking it like जितना जरूरत है नहीं. Similarly, that is what we have done with our resources. Like पानी के साथ किया हमने, agricultural resources के साथ किया हमने, और food के साथ किया हमने. So that is the problem which we have been facing, and I hope this helps us to change our at least mindsets and start inculcating responsible behavior practices in ourselves. ठीक है? Now another is disproportionate use of waste in farms leads to imbalances in soil health. How many of you actually understand and are okay with this statement? Like it, जब हम waste usually गाँव in rural areas, what is there, like we have cows
we cow dung, we disproportionately use it in our fields, but it's not a proper way of doing it actually. As agriculturists, you might be knowing like कार्बन कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा, रॉ है अभी, कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुई, कार्बन कंटेंट इतना ज़्यादा है, pH लेवल पता नहीं कैसी है, हमने सीधे डाल दिया उधर, without composting, without degrading it. So it ultimately leads to imbalances in soil. So these are the issues, these are the challenges we are facing. So we'll have to actually work on these. And there is a scientific methodology to, and that is basic scientific methodology to crack these codes and help us solve these problems. And one methodology is we can convert this waste into wealth. And as a basic example, which you all of you know as well, and which I have been doing for the last 1 year, is converting waste to compost. Actually, we are a company dealing with waste management, and not exclusively agri-food waste. Waste of every sort, every kind, every category. So when we started working on this, our basic principle was कि हमें segregation पे काम करना है. What we have been discussing during the beginning of the session. कि we have to segregate waste. तो waste segregation में हमें क्या करना है? Broader categories, organic waste, inorganic waste. इन दो categories को पहले अलग-अलग करेंगे. Forget about कि फिर polythene कितने types का है, e-waste कितना है, प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, LDPE है, HDPE है, forget about that. पहले इसको segregate करेंगे, ऑर्गेनिक को अलग करेंगे, इनऑर्गेनिक को अलग करेंगे. एंड जब हमने ये वाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया, segregation of waste into organic and inorganic, तो ऑर्गेनिक को क्या करना था हमें? Ultimately, theoretically, we need to convert it into compost, and this compost has helped us to create an agribusiness venture, of which I am the founder and CEO currently. Waste to Wealth, Enviro and Agribiotech Solutions. It is only because of this thing I had to add Agribiotech to the name of the company. It's because otherwise हमारा जो field of work था, scope of work, that was different than this agri business. लेकिन हमने क्या किया? When we converted organic waste into compost, and we are doing it very successfully. We were doing like I published a paper regarding that as well. How we do it, that process, mechanize it, fermentation, adding bioinoculum, you might understand it better, and then ultimately getting a quality product. जब हमने किया, we had a collaboration from the United Kingdom. One company, a Kashmiri settled in UK, he came to our plant. It is very small plant, like it's not कोई बड़ी factory नहीं है, कोई बड़ा कुछ नहीं है, industrial unit नहीं है, but basic. तो they came to us. उन्होंने बोला कि when we talked, हमने जब फोन पे बात की या कुछ और किया तो presentation Zoom meetings, तो they had an idea, as in they are converting waste into compost in the way municipalities across Delhi or Haryana or Chandigarh do it. So they came with the same expectation to our plant, and when they saw what exactly we were doing, they were stunned to see, and they offered us, like without formal deliberation, they offered us collaboration opportunities, partnership opportunities. तो उन्होंने क्या बोला, ये जो आपका basic compost जो आप बना रहे हैं waste से, और इस process से, what we'll do is we'll foster collaboration with you. हम आपका brand launch करेंगे, सारी चीजें आपकी होगी. We will go for value addition of this product. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, compost का एक bag हम for example 500 per bag, which has a packing of 50 kg. ठीक है? 5 rupees per kg. Like it's very basic. ये कुछ भी नहीं है, 50 kg का. And when we go for the value addition of the same product, हम 1 kg का 500 में बेचेंगे. See the exponential rise in the cost, and that is just because of a small value addition. And I think we have time कहाँ तक है हमारा सर? About 5-10 minutes more, 10-15 minutes more. Okay, 15 minutes. So we'll be discussing about these products now, because it's time to discuss now about that. क्योंकि मैंने बहुत कुछ पीछे रखा है, we'll discuss later. So let's go for this thing now. Waste to wealth. तो waste to wealth हमने क्या किया? Compost बना दिया. Second, value addition. This value addition opportunity was from that worthy company. They have an industrial setup in IGC Lasipura,
They have a multinational company operating in 27 countries of the globe. They have one more agri-business company in Aligarh, UP, and they are doing a great business. तो उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी हमारी लैब है, बायो फर्टिलाइजर्स की लैब, वो आप यूज करें डायरेक्टली हैंड टू हैंड. जो भी हमारे कल्चर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, वो आप यूज करें, आप इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए. वी लॉन्च इट एज ए न्यू प्रोडक्ट, एज ए न्यू पैकिंग, और इस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कॉस्ट एक्सपोनेंशियली राइज होगा. उन्होंने बोला कि आप ये तो बेसिक चीज है, आपने ये किया, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव डन लाइक अमेजिंगली, बट व्हाट इट नीड्स टू बी डन इज वैल्यू एडिशन. तो उस वैल्यू एडिशन की वजह से क्या इट्स लाइक, और जब हमने स्टार्ट किया ना, ये वाली चीज जब हमने स्टार्ट की वैल्यू एडिशन, it was a challenge to many of the industrialists as well as businessmen who are dealing with organic fertilizers or any fertilizers in Kashmir. So we faced a lot of challenges. Forget about that कि bureaucratic challenges क्या आते हैं, किसी ऑफिसर को दूसरी कंपनी ने पैसे दिए कि इनका प्रोडक्ट नहीं चलना चाहिए, they come again and again to visit, आपके पास परमिशन कहाँ है, आपके पास ये कहाँ है, वो कहाँ है, and we started explaining every process hand like as a first hand experience. उन्हें देखे, believe me, soil scientists उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, वो वहाँ पे आते हैं, they don't know exactly what they are doing. उन्हें हमसे चीजें ले ली, हम ही एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कि सर ये ऐसे है, ये प्रोसेस है, ये है, एंड they were not knowing, but क्योंकि उनको कोई दूसरी चीज थी ना जो उनको मोटिवेट कर रही थी हमारे पास आने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, कुछ और चीजें करने के लिए, वो नॉलेज के लिए वो they were not desperate about that, they were desperate about stopping us from doing something good, क्योंकि it's a challenge to a bigger industry. और you might be knowing कि यहाँ पे कश्मीर it's an agrarian economy, basically it's like I think not only 50, I think 70-80% of the people are dependent on agriculture because 80-90% is our rural population. तो rural areas में सारे agriculture activities करते हैं. अच्छा, इस पूरी इंडस्ट्री का इनपुट जो आता है agricultural inputs या farming inputs, वो कहाँ से आते हैं? We import them. वो कहाँ से? हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड या पंजाब से आते हैं mainly. And most of the times it's not quality. Most of the times क्या 99% of the times it's not quality. कोई एक कंपनी होगी, मैं आपको example like it will be sort of getting personal to a company, but I have to take the name. It's because it is something which comes in the unethical practices of marketing. टाटा क्या करते हैं? उनका एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, जियो ग्रीन इज अ कंपोस्ट. ओके, कंपोस्ट है. तो उन्होंने क्या किया, टाटा कुछ नहीं करती कंपोस्टिंग में. टाटा शुद्ध बिजनेस ही है, वो नहीं करते कंपोस्टिंग या एग्रीकल्चर, वो नहीं करते. हाँ, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में है, बट एग्रीकल्चर में वो एज सच नहीं है. और फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना, दे विल डू इट. उन्होंने क्या किया, एक कंपनी है रैलिस करके एक कंपनी है, उनको अपना नाम बेचा कि आप अपनी पैकिंग पे लगाओ ए टाटा प्रोडक्ट. ठीक है, टाटा का प्रोडक्ट लगाया, तो बनाते तो रैलिस वाले हैं, वो कहां से बनाते हैं क्या दे डोंट नो, लेकिन टाटा का नाम बिकता है. एंड दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट करंटली इज सेलिंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस एनी कंपोस्ट बैग कैन हैव. और वो बैग 1500-1400 तक भी जाता है रिटेल में. ओके, एंड आई गिव यू इन राइटिंग कि हमारे कंपोस्ट और टाटा के कंपोस्ट में फर्क क्या? Ours is the superior one because we do it organically, we do it actually without any adulteration. और अभी हम नए हैं मार्केट में, हमारे पास आइडियाज भी नहीं है कि गलतियां, ये चीटिंग कैसे करनी है. ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि what people do in the market and what we can do while creating ventures in Kashmir regarding agri business or agri input business. Okay, that is one part, value addition. And then industry and market. I think I have cleared this point, covered this point already. कि industry and market में हमें कैसे खेलना है फिर. That's next. Okay, now comes the crux of our lecture. Diving into entrepreneurship, opportunities and challenges. Moving forward quickly, what actually entrepreneurship means? Any idea? Taking risks. Great. This is my favorite part of the definition. Entrepreneurship. Yes. Anybody else? What actually it is? Innovating something.
innovating something, designing, developing a product out of it, then trying to survive in the market. Anybody else इसको idea है? Innovation? Sorry? Ideation, innovation, yes, creating a product ultimately. कोई like creating a business venture, ठीक है? But entrepreneurship, हाँ? Startups, doing a startup करना, business करना, crude language में, कोई व्यापार करना, to be very crude about it. Like it is actually half of the entrepreneurship. It is half of the entrepreneurship. Actually, जब इसके origin में जाते हैं ना, इसकी definition के origin में जाते हैं, it has a military background. And you know, military establishments are always the ones who are at the highest possible risk level. है ना? Like military, there's a rule in military. Like military के rules आपको पता है. For example, आप यहाँ पे हैं. There's a bomb which is about to explode in a couple of seconds or minutes. You have an order not to detonate it before it explodes. But you know from your every knowledge, every possibility, you are damn sure that it is going to explode in the next 3 seconds. But आपके पास order नहीं है इसको detonate, इसको neutralize करने का. You are not supposed to do it. And it is because this is army rulings. Okay. Entrepreneurship की definition actually इसी background से आई है. कि as I told you कि risk इसमें कितना था. So entrepreneurship is a risk-taking ability of a person or an organization or a group to venture into something innovative, create something new, develop a product out of it, and then market it and try to survive with this product in the market for at least 10-15 years down the line. This is entrepreneurship. Entrepreneurship is something which only risk-averse people can do. Yes, let me be frank enough about it. Risk-averse. But it is some, as Stanford tells us, it's a Stanford definition. Stanford tells us that it is because of this risk-taking ability a person or a group of people has taken that they benefit from it the most. And you see millionaires, billionaires हमेशा यही होते हैं. And you will see people like working on salaries or something like that very hardly make their ends meet. Like they can't aspire too much. हाँ ठीक है, they have a zoom. They can't move out of that zoom. They can't aspire too much. As an entrepreneur, you can do anything and everything on ground. For example, you can change the prime minister of a country within 24 hours. ठीक है? And you have like every example of proving it. Beat America. ऐसा नहीं कि हमारे developing countries में ऐसा होता है. Like इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया गया, that is being decided in the Silicon Valley. अमेरिका में ट्रंप आएगा या बाइडेन आएगा, it is actually decided by the Federal Bank of America, headed by the Jews. इसलिए वो लोग इतना ऊपर है, ठीक है? अच्छा, रशिया के लिए प्यूटिन ठीक रहेगा या कोई और ठीक रहेगा, it is decided in the American lobbies. It is decided by the FBI intelligence. ठीक है? And that's the power of entrepreneurship. And as a very crude example, our friend in Odisha, he recently changed the chief minister of the state of Chhattisgarh. Like not change it, actually उन्होंने बनाया उसको. There was election in Chhattisgarh. My friend is a businessman. He's an investor, a great investor, a big investor. His minimum ticket size is $1 million. Like किसी को पैसे देते हैं ना, his minimum is like $1 million or rupees. तो उसने बोला कि मैंने रिसेंटली उसको कॉल किया, उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा था. तो मेरा एक फ्रेंड है उत्तराखंड का, उसने स्टेटस रखा था व्हाट्सएप पे. मैंने देखा, मैंने उसको दूसरे बंदे को फोन किया, मैं भाई यहाँ पे नहीं हो क्या? बोला नहीं. मैंने बोला क्यों? बिकॉज आई एम बिजी विद द इलेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़. मैंने बोला छत्तीसगढ़ में क्या करें, आप तो उड़ीसा के हैं. बोला भाई चीफ मिनिस्टर बनाना है. वहाँ के चीफ मिनिस्टर. मैंने कौन? बोला एक बंदे पे इन्वेस्ट किया है, he is going to win the elections
एंड इलेक्शन तो जीतेगा क्योंकि पैसे दिए हैं हमने बहुत सारे, बट वी वांट हिम टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. एंड इन द नेक्स्ट 3 days आई वाज फॉलोइंग द न्यूज़, मैंने देखा वो बंदा चीफ मिनिस्टर बन गया. ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड यस, cutting long story short, there is ample opportunity with respect to entrepreneurship. I was a hardcore academician. Oh, क्या बोलते हैं इसको? Bookworm type of boy, a genius, like topper since my childhood. जिस भी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, like in the Clinton University, I did not score 99.9. I scored 100%. Okay, so and luckily. My mentor, my professor was, she was Dr. Rasha Al-Haza, a great personality. She was from Saudi Arabia, and she had done her academics in the United States, and then she was working as the professor of the university. Once I discussed with her that what is the minimum like grading or marks or stuff like that which we should get to complete the program. तो उन्होंने बोला कि what have you to do with that? मैंने बोला but I just want to have an idea like how Americans evaluate sort of culture. मुझे देखना था कि ये लोग evaluate कैसे करते हैं. तो then she highlighted a number of factors कि इन factors को देख के हम evaluate करते हैं. तो मैंने आपका पेपर जो भी है assignments, work, project report ऐसे ही मैंने इसको evaluate किया है. And in one of the submissions, because of the time zone difference, I was a bit late. वहाँ पे America is one day, not one day, 13 hours around. Time zone का difference है. यहाँ सुबह के 10 बज जाएंगे, वहाँ शाम के नहीं, last night के 10:30, ठीक है? 11:30 is the difference in the time zone. तो मेरा वो submission late हो गया था उसकी वजह से. मैंने submit किया, but it was showing submitted late क्योंकि मैं उनके हिसाब से चलता था ना. फिर for last 1.5 years I am working the 2 time zones, ठीक है? And I have been actually working like not taking proper rest for last 1.5 years, believe me. So because दिन में अपना काम, फिर रात में वहाँ पे evening होता है, वहाँ पे morning start होता है, ठीक है? So it was like that. तो मैं उस चीज़ के साथ फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, I submitted on time because of the time zone, so there are issues at times. She said okay, yes, I understand this. By anyway you are getting 100% IR. ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें कर करके मैं like normally as students aspire to be a doctor, an engineer, an agricultural graduate, maybe a professor, lecturer. I did not delve into it. I went to the civil services preparation. Civil services, I was selected for AMIR. तो AMIR मैंने सिविल सर्विस को देखा, मुझे like this entrepreneurial spirit actually came from there. क्योंकि जो आपको भी आइडिया होगा, मे बी कोई बनना चाहता होगा ब्यूरोक्रेट, जब सिविल सर्विस पढ़ते हैं ना, यू रीड अबाउट एवरीथिंग, everything, like सिलेबस तो कोई लिमिट ही नहीं होता. And I saw a lot of opportunities in the globe, lot of opportunities. I left civil services, delved into entrepreneurship, started a program at the Clinton Global Initiative University. Currently, I'm already in 2 continents, 3 rather. ऐसा तो बोल दिया था इंडिया की वजह से, ठीक है? rather 3. There's a program in South Africa, young professionals mentorship program. I was recently inducted into that, and in the Clinton, I'm already there's an academy which is called Global Citizen Year Academy, founded in America, New York. Last year I was a mentor, a reserve mentor for them for quite a number of people. Like this time, I have 10 people from different universities of America who are under my supervision. Like उनके projects accomplish करने, तैयार करने, ठीक है? That is the possibilities and the opportunities which entrepreneurship gives you, or doing something out of box gives you. I mean to say this thing, nothing else. मेरा कहने का ये मतलब है कि I was also a staunch believer of academics and stuff like that, bureaucracy and something. But there are a lot of opportunities which वहाँ पे रह के आप नहीं कर सकते. Here you can do. And alhamdulillah, I'm running an NGO after the name of my grandfather and my grandmother, Fatimatul Nabi Foundation for Service of Humanity. Alhamdulillah, I do a lot of charity work, and it's only because when you are here. Particularly आज के टाइम पे you can't do, अगर आपके सैलरी से 10,000 कहीं और जाएंगे ना, you'll have an NIA rate कि ये कहाँ गए, ठीक है? And it's only possible जब आप out of the box होंगे. All right.
So entrepreneurship is something which we want to delve into, and I hope many of you come out as entrepreneurs. Now for you in the waste management industry, for you there are a lot of opportunities. वेस्ट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री, अब हमने बात की ना ये वेस्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे वेस्ट को लेके. वेस्ट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री. वी ऑपरेटेड एज एन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक्चुअली, एंड cutting long story short, we are operating in Kashmir for last 2 years as a waste management. Like municipalities को जरूरत है ना वेस्ट मैनेज करने का, इनके पास जैसे मैं बोले क्या करते रहे पिछले इतने सालों से. Like we propose a solution, it is something like we want to make waste management as something like dream lab. Dream lab के लिए क्या हर घर में 2-3 बंदे खेलते हैं ना, dream lab क्या है? Boys might be having, हर घर में 2-3 बंदे ड्रीम 11 खेलते हैं और अपने पैसे लगा के खेलते हैं. ठीक है, 99 वो 59 करोड़ का स्कैम नहीं है, वो छोड़, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ड्रीम 11 इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, क्रिकेट फैंटेसी की जो वो अपना प्लेइंग 11 बनाएगा, अगर सबने परफॉर्म किया तो एक बंदे की रैंक 1 नंबर पे होगी, he'll earn crores or lakhs or something like that. तो हमारा वो मॉडल नहीं है actually, but something like, for example, in this university or in this area, if 100 people are registered with us, they sell segregated waste to us, wet अलग, dry अलग, or maybe plastic अलग, e-waste अलग होगा, and they are registered on the portal. They sell this much of quantity in a week. The highest seller will be awarded a cash prize of 10,000, 15,000, whatever the capacity or whatever the price will be at that time. ठीक है, तो हम ये मॉडल लेके गए. It was accepted by the Lieutenant Government Administration in Kashmir, and we started a pilot project in Kulgam. Yesterday, one pilot project we started in our. यहाँ पे कोई कुलगाम से? कहाँ से? कौन? Great. Chansar. Okay. Chansar is an Anglicized pronunciation. Chansar से मतलब तो इसका 80%. ठीक है. तो यस, yesterday हमने अश्मुजी आप जानते होंगे, हाँ अश्मुजी में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, एंड एज अ पायलट प्रोजेक्ट it turned out to be something incentivizing and success for the government. Yesterday we got all the 11 blocks of Kulgam district. Yesterday we had a contract. I'm signing the contract today. Also I actually had to go to 2 blocks to sign that contract. We signed that contract to operate as a waste management entity. उनको waste management services provide करना. I'm asking you, like telling you about the waste management industry. इसका scope कितना है? Like it is going to be the next gold mine, believe me. ठीक है, आप यात्रा सीजन में देखेंगे ना, यात्रा पहलगाम में there are around 10 companies who are working. वो क्या करते हैं? वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं सफाई के लिए. किनको? यात्रा श्राइन बोर्ड को. और वो कुछ नहीं करते, तुमसे जमा करो, देन फेंक देते हैं कहीं पे जंगलों में. तो they charge the government in crores. Every company takes around 20-25 crores every year. और यात्रा के सीजन में 2-3 महीने में. ठीक है, इट इज समथिंग. और वो सोल्यूशन नहीं देते कोई, वो जस्ट ऐसे मतलब साफ सी करम छोक कोई सारे, दे आर नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन. बट गवर्नमेंट भी मजबूर होती है, वेस्ट वो ये जमा कुछ तो करना ही पड़ेगा. अल्टीमेटली क्या इन्हें सब लोग लगे हुए शायद एटलीस्ट टूरिस्ट को नहीं दिखना चाहिए, जैसे G20 में किया गया, रोड्स एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, अच्छा ये हो गया वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. वेस्ट मैनेजमेंट एज ए सर्विस. फॉर एग्जांपल हम आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि हम आपको वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको मॉडल बता दिया, सेग्रीगेट करेंगे, ट्रीट करेंगे, फिर फॉरवर्ड लिंकेजेस देखेंगे, रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, तो सर्कुलर इकोनॉमी में वापस प्लास्टिक को कैसे लाएंगे, नए प्रोडक्ट्स से फर्नीचर बनाएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे, पब्लिक पार्क्स के लिए टाइल्स बनाएंगे, स्टफ लाइक दैट. तो हम आपको सर्विस देंगे, आप हमें चार्जेस दीजिए. फॉर एग्जांपल पर हाउस होल्ड के हिसाब से, या पर क्लासरूम के हिसाब से, या पर एनरोलमेंट के हिसाब से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट एज अ सर्विस. हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम इनसे चार्ज करेंगे. दिस इज वन मोर इंडस्ट्री इन वेस्ट मैनेजमेंट. देन वेस्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोडक्ट. वेस्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोडक्ट, व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट. ठीक है, ये हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे वेस्ट से, वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, बायो फर्टिलाइजर्स में, बायो इंसेक्टिसाइड्स में, उनका वैल्यू एडिशन करेंगे, फिर वील सेल हाई एंड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे डल लेक आपने देखा है ना, लाइक वहाँ पे कितना, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट जो वहाँ पे होता है, which species is that? डल लेक में जो सीवीड्स है ना, वीड्स जो है, किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट है उस पे? नहीं? Anybody looking for that? That's a great opportunity because हम जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड है बायो फर्टिलाइजर्स को लेके,
वो सीवीड लाती थी चिली से। चिली देखा है ना मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, चिली इज वन ऑफ द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, और समंदर के एक पर्टिकुलर डेप्थ पे वो एल्गी बनता है, ठीक है, वहां से वो लाते हैं, एंड दैट एल्गी इज अ डायरेक्ट ग्रोथ प्रमोटर फॉर प्लांट्स, डायरेक्ट ग्रोथ। और उसका वैल्यू पता है कितना है? लाइक athas mas isahan hakulis to that's like diamond, athas mas is hakulis, it can be added to around 50 bags, and these 50 bags can cost us 1000 a bag, it's like that। और इंडिया की कुछ कंपनीज है जो वो चीजें इंपोर्ट करके लाती हैं और फिर यहाँ फोर्टिफिकेशन करके वैल्यूएशन, सॉरी Spirulina is something different from that. कौन सा? Spirulina निकलता है ना, वो भी that is also product derived. Yes, yes, that can be as a growth promoting hormone or something like that, ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज इनमें है। सिमिलरली वी हैव डल लेक किया, वहाँ पे कितना सारा निकलता है, अगर कुछ भी नहीं बनेगा उसका तो कंपोस्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अगर कुछ भी कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं बनेगी बट कंपोस्ट बनेगा। एंड एक तो हम उसमें बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे, दूसरा डल लेक वालों को जो लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, ये जो इसके साथ डील करती है, कभी पूछ लेना किसी बंदे से, इट्स नॉट एम्पल टाइम, लाइक वी डोंट हैव एम्पल टाइम टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बीइंग कश्मीरी मुझे सब कुछ पता है ऑन ग्राउंड, मैंने सब कुछ देखा है, फ्रॉम एलजी ऑफिस टू स्वीपर, आई नो एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग एक्चुअली इन द ऑफिस। और मुझे पता है दिस इज स्कैम ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिटरली, कि वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने बंदे लाते हैं, ये करो, किसी तरह हटाओ यहाँ से, बस साफ दिखना चाहिए, फोटो 2-3 ले लिए, सर बिल पास कर दो, कितने करोड़ की बिल है, 10 करोड़ की बिल है, इट्स लाइक दैट, और उसका 10-20 लाख जाता है अपनी जेब से, वो एज ए टोकन मनी तो वो कर लेता है, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम बोलते हैं कि भाई देखो हम आपको लेक साफ करके देंगे, डल लेक को साफ करके देंगे, हमें चार्ज दे दो, दैट्स इट, सॉरी दैट्स इट, लेक साफ करके देंगे, उसके पैसे दिए, फिर जो वहां से रॉ मटेरियल आपको मिल गया दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप कहीं पे अपना प्लांट सेट करोगे, वहां पे आप यू कैन बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट, है ना, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी व्हिच यू आर ट्राइंग टू टैप ऑन। So that is waste management as a product, and that is again agricultural waste or food waste. Organic waste I am talking about, rest all something else. अच्छा, as a good news, compost market is globally estimated to be around 9.2 billion dollars. ठीक है, रात हो जाएगी इसको हिसाब करते करते 9.2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, इस 9.2 बिलियन का 0.1% टैप करना है, एंड वी विल हैव अ शेयर फॉर द कश्मीर इकोनॉमी। 0.1% टैप करेंगे इस कंपोस्ट का, एटलीस्ट हम क्या करें, एटलीस्ट अगर हम जितनी भी अभी इंडस्ट्रीज बाहर की यहाँ पे आ रही है ना, बायो फर्टिलाइजर को लेके, ऑर्गेनिक कंपोस्ट को लेके, होता कुछ भी नहीं है, बिलीव मी दैट इज ऑलवेज अडल्टेड एंड सेकंड क्लास प्रोडक्ट जो सेल करते हैं। अच्छा, अगर हम उसका 10% कैप्चर करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में, दिस आर द प्रोजेक्शन जो टेक्निकल, ठीक है, ये प्रोजेक्शन जो हम बनाते हैं ना, इट्स लाइक वेयर बिजनेस कंसल्टेंट एज अ कंपनी वर्क इन बिजनेस कंसल्टेंसी, जो मैंने आपको बोला है एज अ हिंट, एज एन अपॉर्चुनिटी, ये प्रोजेक्शंस होती है टेस्टेड, ठीक है, नेक्स्ट 5 इयर्स में इस मार्केट का 10% कश्मीरी को कैप्चर करना है, अगर करेंगे कश्मीर इकोनॉमी को और कुछ भी नहीं चाहिए, टूरिज्म को इम नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के इम नहीं, बाकी सूट इंडस्ट्री के इम नहीं, ठीक है, जिसका ये लोचा बनाते हैं फॉर लास्ट 2-3 इयर्स, आपने देखा होगा कैलिफोर्निया का लाते हैं, वाशिंगटन का लाते हैं, कभी चाइनीज, कभी कुछ और लाते हैं, एंड दैट्स एक्चुअली, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इश्तबान आज हम जो एप्पल प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज वो एप्पल नहीं होता है, जो देयर इज अ कोट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स लाइक रिवर्स, एन एप्पल अ डे इनवाइट्स द डॉक्टर एवरी डे, ठीक है, इज व्हाई, बिकॉज़ हम जो इनपुट्स यूज करते हैं, व्हाट इज दैट, इट्स कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर होता है, हम कैंसर खाते हैं, खिलाते हैं लोगों को, और आप यू थिंक कि मेरा जहर से बनाया हुआ एप्पल अमेरिका का बंदा खाएगा, नेवर एट ऑल। मैं आपको भी डेटा दिखा दूंगा, ऑर्गेनिक इनपुट्स की अमेरिका में कितनी डिमांड है, मैंने रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द कलीग्स इन माय नेटवर्क, तो मैंने उनको बोला कि देयर इज अ डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ने बोला ठीक है, हाँ, कहाँ से आता, फिलीपींस से मोस्टली आता है, हनी उनका, और ये मैपल सिरप आता है, जैसे हमारा हनी है, तो उन्हें बोला कि देयर इज एन एम्पल डिमांड, तो मैंने सिंपल सा एक शॉपिफाई पे एक कार्ट बनाया, मार्केट प्लेस, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, ठीक है,
शॉपिफाई और उसी की आईडी यूज की, अमेरिका उसी का, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अमेरिका का, उसी के पास पेमेंट भी आएगी, उसके पास ऑर्डर्स भी आएंगे, मुझे एक ही बार यहाँ से भेजना है, कोई वेयर हाउसिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑर्डर 10-15 आएंगे, लाइक thousands of dollars, घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना, लेकिन ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर डेल्विंग इनटू दैट ऑर्गेनिक, आई टेल यू इन द कंक्लूजन पार्ट कि हम वो ऑर्गेनिक सेक्टर में भी टैप कर रहे हैं। एंड देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑर्गेनिक इनपुट जो इनपुट्स है वो सब्स्टिट्यूट करने हैं, केमिकल्स नहीं यूज करने हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स, एंड इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। मैंने इसलिए बोला नेक्स्ट 5 इयर्स में 5% कैप्चर करना है, 10% कैप्चर करना है। अगर कोई शुद्ध 3 कनाल 4 कनाल बाद, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले ही साल सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स, स्लोली, ठीक है, करियो 2 करियो एक हिस्से में कंप्लीटली ऑर्गेनिक, और उस ऑर्गेनिक वाले हिस्से को अलग से ही बेचो, मार्केट करो, अच्छे उसके अलग पैसे आएंगे, मोर देन डबल देन द रेस्ट 2 पार्ट्स ऑफ द ऑर्चर्ड, ठीक है। 9.2 बिलियन इज नॉट अ जोक एंड इट इज ग्रोइंग एट एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 6.8 बाय द ईयर 2024, नेक्स्ट ईयर टारगेट। आई थिंक ये फिगर भी चेंज हो जाएगा, मे बी एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि अभी मैं आपको फिगर्स और भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक्स की कितनी डिमांड है, पर्टिकुलरली इन अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन नेशंस। अच्छा, ये होगी ये 2-3 सेक्टर्स एज एन इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी। देन फाइनेंसिंग वेस्ट मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे कोई भी है ना वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, वी आर ओपन टू कोलैबोरेट विद देम, एंड इट्स नॉट लाइक आपके पास कोई भी आइडिया है कंपोस्टिंग के रिगार्डिंग, बायो फर्टिलाइजर्स, कोई बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड कल्चर करना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप यहाँ से कल्चर करके हमको बना के देंगे, वी विल डायरेक्टली कोलैबोरेट विद यू एंड वी विल फाइनेंस यू राइट अवे। एंड अब इस वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने जैसे बोला, इट्स अ गोल्ड माइन टू बी टैप्ड इन द नेक्स्ट कमिंग इयर्स। तो अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, ऑलरेडी किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो व्हाट ही और शी कैन डू इज इन्वेस्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट एज अ कंपनी। कोई फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे किसी के पास आइडिया आया कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलूंगा, ठीक है, किसी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 30% अपनी कंपनी के दे देना, ठीक है, डॉक्यूमेंट होगा, he will work or she will work on that, आप इन्वेस्टर रहेंगे उसमें, तो कंपनी ग्रो करेगी, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट को फाइनेंस करना, इट इज अगेन एन इंडस्ट्री, ठीक है। These are the opportunities which you can tap. Biofertilizer, अब देखिए, I was talking about giving some figures regarding organic agriculture or organic practices. International Federation of Organic Agriculture Movements, इनका रिपोर्ट है कि ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया इज कल्टिवेटेड इन 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मुझे बताएं, सी इज देयर एनीबडी हु हैज एनी कंटिंजेंसी ऑफ गोइंग और समथिंग, इसको जाना, ओके, प्लीज लेट मी नो, इट्स नॉट लाइक एनीबडी कैन लीव विदाउट माय परमिशन, नॉट एट ऑल एन इशू, और किसी को इमरजेंसी भी होगा तो वो निकल सकते हैं, ठीक है। आईफोन का एक डेटा है कि इंडिया being 5th largest producer of organic food, 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है तो लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग शायद इंडिया को हो गया ऑर्गेनिक का, कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। इट इज ओनली 1.5% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। इमेजिन, लाइक 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड का है, फिर भी 1.5% अभी तक लैंड है जिसपे होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं, 1% इज नथिंग, ठीक है। अच्छा, अगेन एन ओपन अपॉर्चुनिटी, इंडिया इंक्रीज इट्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, और ये 1.5% पता कैसे हुआ, लास्ट 10 इयर्स में 145% इंक्रीज हो गया, लाइक हर साल डबल होता गया, मोर देन डबल, ठीक है। तो तब जाके 1.5% पे हम पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स वर फेवरेबल फॉर दिस, तो इसलिए ऑर्गेनिक 1.5% अभी है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे नाम किसी ने सुना है? इकोनॉमिक सर्वे इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सबसे ऑथेंटिक होता है, इसी रिपोर्ट के मुताबिक सारी बजट, सारी पॉलिसीज बनती है कि नेक्स्ट 1 साल फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च करना है कंट्री को, किस पे खर्च करना है, कितना किन सेक्टर्स पे। इन 23 का रिपोर्ट है कि 4.43 million organic farmers are there in the world, in India, and this is highest in world. Why is it highest? आपको लगता होगा यहाँ भी सब कुछ highest है, लैंड भी सबसे ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट है, तो फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ है? This is a question to be asking. But the problem is
इंडिया में सब कुछ ही, जब कोई भी प्रोग्राम होता है लार्जेस्ट ही होता है। नरेगा एज अ प्रोग्राम, ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन इंडिया का, स्वच्छ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, भारत का नाम रह गया, मिशन भी कहीं पे नहीं है, बट वर्ल्ड इज लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम। इट इज बिकॉज, और आपको पता है इंडिया की आजकल चलती है दुनिया, राइट? नो, इट्स बिकॉज इट इज आई फॉलो जियो पॉलिटिक्स अ लॉट। इंडिया की आजकल दुनिया में चलती है, इट्स नॉट लाइक एस्केप अंदर नहीं किया साइज दाब वाब के नाम कुछ नहीं, इट्स बिकॉज कि इंडिया की चलती है। इंडिया से मार्केट, इंडिया सैमसंग के लिए मार्केट है, इंडिया एप्पल के लिए मार्केट है, इंडिया टेस्ला के लिए मार्केट है, ठीक है। दुनिया में 5-6 लोग जो है जो वर्ल्ड को चलाते हैं, वो उनका इंडिया मार्केट है। तो इवन सऊदी अरेबिया, आरामको इज अ कंपनी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 बिलियन इन इंडियन ऑयल इंडस्ट्री। आरामको पता है ना, सऊदी की है, ठीक है। हम बड़े झंडे गाड़ देते हैं यहाँ पे, हैं मुस्लिम ये करेंगे हमारे लिए, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम किसी को बोलते हैं कि जैसी चीज़ करूँ थोड़ा सा सैक्रिफाइस, कुछ अच्छा होगा लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए अच्छा होगा, ही इज नॉट रेडी। तो आरामको एज ए कंपनी $103 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं इंडियन ऑयल इंडस्ट्री में। तो वो क्या इंडिया से रिलेशन खराब करेगी अपनी? नॉट एट ऑल, ठीक है। सिमिलरली टेस्ला, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, जो भी है बिलियनियर्स, और इनफैक्ट नाउ इंडिया हैज अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग और एक्सेप्टिंग इजरायली पॉलिसीज अ लॉट। एग्रीकल्चर में इसराइल को भी ला रहे हैं इंडिया में, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और इसराइल, देखो इसराइल, उनके पास टेक्नोलॉजी है, यू शुड एक्सेप्ट दैट, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो करते हैं, हम करते ही नहीं ना कुछ, वी डोंट डू एनीथिंग। तो वी डेफिनेटली हैव टू सर्व अदर पीपल, हम किसी के ऊपर थोड़ी चलाएंगे। इवन क्रिकेट को लेके, बीसीसीआई को लेके, ठीक है, किस प्लेयर को किस टाइम पे किस डिसीजन पे आउट दिया जाएगा, कौन सा डीआरएस सही था, कौन सा गलत था, दैट इज डिसाइडेड बाय इंडिया इन द आईसीसी, ठीक है। एंड यू वेल अंडरस्टैंड इट हैज अ रीजन, क्योंकि आईसीसी को फंड करते हैं, आईसीसी एक इंस्टीट्यूट है, उसको फंड करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेनली, एंड इंग्लैंड एट द थर्ड पोजीशन। जब इंडिया 90% ऑफ द फंड आईसीसी को करेगी, तो मानना तो पड़ेगा ना इंडिया का, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन इशू। अच्छा, तो इट इज बिकॉज इंडिया एक अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका, ठीक है, और प्लीज, ठीक है, आई मे बी गोइंग डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक समटाइम्स, कभी-कभी देख लेना, व्हेन मेकअप इंडस्ट्री हैज टू बी एक्चुअली डेवलप्ड, मेकअप इंडस्ट्री को, अमेरिका की मेकअप इंडस्ट्री को क्या करना था, बूस्ट करना था। तो अफ्रीका सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है, और अफ्रीका की किसी लेडी को मिस यूनिवर्स बना दिया जाएगा उस टाइम पे। व्हाई? बिकॉज दैट लेडी विल do promotion and advertisement for that particular company, maybe Johnson, maybe Hindustan Unilever, maybe any company, ठीक है। और वो डिसीजन कि अफ्रीका की लेडी को क्यों ब्यूटी में, अदरवाइज लाइक, ठीक है, वर्ल्ड में इट मे बी अ लिटिल बिट डिस्क्रिमिनेटरी अबाउट दिस, लाइक ब्लैक ब्यूटी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर करना, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि मार्केट होता है, मार्केट इज ओनली ड्रिवन बाय द मार्केट, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, दैट्स व्हाई इनकी हर जगह पे चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये 5th लार्जेस्ट जो भी है, इट इज बिकॉज कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये बन जाता है ऑटोमेटिकली 5th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। सो प्लीज कमिंग बैक, कोई बोर तो नहीं हो यहाँ पे? प्लीज ऑनेस्ट रिप्लाईज, फिर मैं बंद करूँ, हाँ, ठीक है। एनीबॉडी प्लीज, अगर है कोई थोड़ा किसी को लेजी फील हो रहा है, बोर हो रहा है, तो एनी हैव ब्रेक, ठीक है, एंजॉय योर टाइम, यहाँ पे वेस्ट करने का फायदा है नहीं, ठीक है, ओके। एनीवे, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर कोऑपरेटिंग। अच्छा, अपेडा एक एजेंसी है, अपेडा यू माइट नो इट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। इनका भी रिपोर्ट है कि इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 2.9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखिए, एक वर्ड से एक इंडस्ट्री निकल आती है। ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, प्लीज अटेंशन प्लीज गाइस, ये जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ना, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपको डिग्री लेनी है, कहां से लेंगे? यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफाई करेगी, ठीक है। दिस पर्सन इज सर्टिफाइड एज अ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंसेस,
and food technology or anything like that. इसी तरह जब ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, प्लीज, जब ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जरूरत पड़ेगी ना लोगों को। हर कोई चाहेगा भाई मेरे को, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, मेरे प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। फिर वो हो या ना हो, लेकिन सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है। इफ यू एज अ बिजनेस वेंचर, इफ यू बिकम a certifying agency, आपके पास क्या कोई बेसिक फॉर्मेलिटी होगी, आपके पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास ऑफिस होना चाहिए, और ये जो है, जो इनकी एजेंसी है, अपेडा है, कोई भी है, ये आ जाएंगे, इनको पावर्स देने कि हाँ यू कैन सर्टिफाई समबडी एज ए ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कंपनी या प्रोडक्ट। तो दिस इज अगेन ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एनीथिंग और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो दिमाग में है कुछ जो मैंने बताया अभी तक, कौन कौन सी इंडस्ट्री है? वेस्ट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोडक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एज अ सर्विस, ठीक है। Why I have deliberately used that WAS, WAAS, WAS, वेस्ट मैनेजमेंट एज ए सर्विस, बिकॉज आपने देखा होगा, कभी कभी स्टार्टअप न्यूज पढ़ते हुए देखा होगा कि किसी कंपनी को $5 million मिले सीड फंडिंग में, बायजूस ने फॉर एग्जांपल $400 million रेज किए। दैट इज बिकॉज these are the sectors, किस सेक्टर में? फिनटेक, एजुटेक, वेस्ट मैनेजमेंट एज ए टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इट इज व्हाट्सएप हमसे कुछ भी नहीं लेता, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, इनके यूजर्स हैं, डेटा से पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्विस है, व्हाट्सएप इनका एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए SaaS, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इसी तरह WAS, वेस्ट मैनेजमेंट एज ए सर्विस, इट्स अ वर्ड कॉइन्ड बाय माय सेल्फ, WAS, waste management as a service, ठीक है। Okay, so these are like all these opportunities which we can delve into as entrepreneurs, and this is what we offer. Agar if you are clear enough in your mind, I have taken ample amount of time from you all, ठीक है। So किसी और का सेशन है क्या इसके बाद? This is last one. Okay. अच्छा, यूजुअली आप लोग का क्लोजिंग टाइम क्या होता है? 4 बजे। इसके बाद कोई सेशन है आपका? कहीं पे भी नहीं? Then I think are you comfortable? हाँ, 10-15 मिनट, ठीक है? Okay. अगर किसी को कोई इशू होगा, निकलना होगा या कुछ है, कोई भी इशू है तो प्लीज he or she can leave. अच्छा, now this is what my team, what my company, what my organization offers to all of you as entrepreneurs. What we offer as an agribusiness, agri-finance and incubation initiative. We are delving waste to wealth, हमारा waste management initiative है. Now we are starting this Ozone Ventures. Ozone Ventures is actually a word derived from organic actually, ठीक है? Organic Zone Ventures. So we are delving into organic agricultural businesses. And particularly India में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ J&K इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है HADP. Is anybody comfortable enough to listen to me for next 10 minutes more? ठीक है, प्लीज, ओके, प्लीज, थैंक यू अगेन फॉर कोऑपरेटिंग, ठीक है। अच्छा, ये एग्री बिजनेस, एग्री फाइनेंस और इंक्यूबेशन इनिशिएटिव, इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया है, दैट इज कॉल्ड HADP, Holistic Agriculture Development Program, ठीक है। HADP इट इज अगेन, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट एक गोल्ड माइन है ना, इसका जो J&K गवर्नमेंट की स्कीम है HADP, ये एक गोल्ड माइन है। It's a chance to explore this gold mine and extract whatever you can. मतलब is really a gold mine. Why? Because इसमें तकरीबन 25 to 30 schemes है, initiatives है, which are from this production, agricultural production or plantation or seed culturing or biofertilizers, bio inputs to agri-finance to agricultural service sectors or service centers, ठीक है, जैसे खिदमत सेंटर्स है। खिदमत सेंटर्स, डू यू हैव एन आइडिया? खिदमत सेंटर्स जो होते हैं ना JK बैंक के, कितना बड़ा एक वेंचर है? बहुत बड़ा है ना, लाइक हर गांव में एक मिलेगा, हर गांव में। तो उसी तरह एग्रीकल्चर खिदमत सेंटर्स होंगे, ठीक है, एग्री सर्विस सेंटर्स। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं करना है ना,
as a food technologist, as a doctor in agriculture sciences, as a BSc agriculture, as an MSc agriculture, as a researcher, आप लोग एक सिंपल सा ऑफिस खोल सकते हैं अपना कहीं पे भी इस स्कीम को टैप करके, ठीक है? You just have to provide services. You just have to provide services regarding this agriculture. Agriculture as a service center, ठीक है? वो क्या करता है, जैसे खिदमत सेंटर काम करता है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वैसे ही you can do with related to agriculture, and there is nothing to share on. Like इसमें क्या है, कुछ भी नहीं. This is something very native and like is something which our prophets have done. Like, agriculture is something which our prophets have done. Agriculture, animal rearing, sheep husbandry, anything. Like this is something which our prophets, which most saints, renowned prophets or scholars of the world have done. ठीक है? And it is something very natural to us, very natural to us. ठीक है? तो this sector we can tap on. HADP. तो हमारे इस ओजोन वेंचर्स में क्या है? एक एक्सक्लूसिवली एक प्रोग्राम हमारा है जो इस सेक्टर को टैप करेगा. ठीक है? इसमें मेनली क्या होता है, देयर विल बी अ सब्सिडी कंपोनेंट एंड अ फाइनेंस कंपोनेंट. अगर आपके पास पैसे हैं लाइक 2, 3, 4, 5 लाख डिपेंड्स के आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 टू 50 लाख, ठीक है? हर रेंज के इसमें प्रोजेक्ट्स है, स्कीम्स है, और हर स्कीम में मिनिमम 35 to 80% सब्सिडी. व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है किसी स्कीम में, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे. You will have to invest only 50 lakh. 1 करोड़ के बिजनेस में आपको 50 लाख ही करना है. 50 lakh will not be only a loan, that will be a subsidy. क्योंकि आपको 50 लाख ही वापस देने पड़ेंगे, 50 लाख देने ही नहीं है. And in that there are other components जहाँ पे 80% सब्सिडी भी है, 35% सब्सिडी है, 50-40%. मतलब there is every possibility to capitalize on this market. जो ये कंपोस्टिंग का है ना, बेसिक एक है. फॉर एग्जाम्पल कंपोस्टिंग, कंपोस्ट अगर कोई बनाएगा ना, दैट इज समथिंग 50% सब्सिडी है उसपे. 50 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है? 50 लाख का प्रोजेक्ट है, आपको 15 लाख ऐसे ही सब्सिडी आएगी. अगर आपको पैसे लेने ही नहीं है, ना बैंक से लेने हैं ना गवर्नमेंट से लेने हैं, फिर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं. कैसे? आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख में अपना एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट घर पे बना दिया, आपके पास लैंड है, बना दिया, ठीक है? प्रोडक्ट दिखा दिया कि इतना बड़ा है. फिर एस्टिमेशन किसी बिजनेस कंसल्टेंट से मिलके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कि इसका कॉस्ट टोटल कितना है. फॉर एग्जांपल आपका जो टाइम होगा, उसकी सैलरी, आपके एम्प्लॉयज उनकी सैलरी, एक्सपेक्टेड जो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सेटअप करने का, लैंड का कॉस्ट, बिल्डिंग का कॉस्ट, मशीनरी होगी, पैकेजिंग होगा, छोटी मशीनरी होगी कुछ, या डॉक्यूमेंटेशन या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स या अर्जेंसी एक्सपेंडिचर्स, वो सारे मिला के आपका 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आराम से बन जाएगा. 5-6 हज़ार रुपये उसमें लग जाएंगे आपके. ठीक है? आपको लेना ही नहीं है फाइनेंस 50 लाख का, आपको किसी से पैसे नहीं लेने, अपने 4-5-6 साल मे बी हार्डली 10 लाख तक का प्रोजेक्ट आपका जाएगा. ठीक है? आपको 15 लाख सब्सिडी आ जाएगी अकाउंट डायरेक्ट. देयर इज नो, एक इंस्पेक्शन होगा, वो देख लेंगे इसने किया है, दैट्स इट. तो दैट इज व्हाई हम इस सेक्टर को टैप कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग एवरी सॉर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड टू दैट, एग्री बिजनेस को लेके फ्रॉम आइडिया टू मार्केट. आपको इंक्यूबेशन चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको सब्सिडी चाहिए, आपको बिजनेस डेवलपमेंट करके देना है, आपको आपकी ग्रोथ को लेके एवरी पॉसिबिलिटी इज विद अस. ठीक है? लाइक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई प्रॉमिस्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि देयर वी स्टार्टेड विद दैट कोट. I mean, anybody remembers that? I am sure most of you. Yes. Yes, I would like to listen from some of you. Yes, opportunities. I just remember opportunities favor. Determine. Yeah, opportunities always favor a prepared mind. Okay? Yeah. So it is because if your mind is prepared, this is something which my friend taught me while we were in college. ठीक है? ठीक है? Why I'm trying to relate everything with myself and my stories, because storytelling is the most impactful method of portraying something which has been proven by research. Okay, that's why आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ये दोस्ती की कहानी याद रह जाएगी. ठीक है? That's why. So one of my friends had taught me कि अगर आपको कुछ करना है ना, उसके लिए दिमाग तैयार होना चाहिए. Like आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी लाइफ, बट अगर आपका दिमाग वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, वो सबके सामने गुजरेगी, लेकिन कोई एक होगा जिसका दिमाग तैयार होगा. He will tap on this, she will tap on this,
and rest will be history. Okay, that is I think that is what we were about to deliver, learn, think, and probably take something in our mind. I think I have tried a little bit to come up to your expectations. I'll be happy to answer any of your questions regarding any query, because I have been a student of life. I'm a student till date, and I know exactly what situations a student has to go through in life, mostly in this juncture of time. Okay? Anything means anything. Okay? You can ask. The conclusion is in front of you. You'll just give it a read. Due to cumulative efforts of the government in 2021, India's organic product exports surpassed $1 billion, with the United States absorbing 54%. जो मैं भी बोल रहा था ना, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। $1 बिलियन इंडिया ने फॉर एग्जांपल भेजा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, 54% उसमें अमेरिका ने एब्जॉर्ब किया। अच्छा, विद ऑर्गेनिक प्रोसेस्ड फूड्स, ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड फूड्स, फूड टेक्नोलॉजी वाले दे रेट मोर ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड फूड्स, ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड फूड्स being the largest organic export product. ठीक है। Another thing, exports to US is followed by European Union and Canada. आपके पास यूरोपियन यूनियन या अमेरिका इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी वाइज अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अमेरिका की इकोनॉमी आपका मार्केट होगा, वहां पे जो एप्पल अगर आप ऑर्गेनिकली बनाएंगे ना यहाँ पे इंडिया में या कश्मीर में, 5 रुपीज का एप्पल 500 रुपीज में बिकेगा इन अमेरिका। दैट इज वैल्यू फॉर, बिकॉज अगर ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक होगा, जो हम कैंसर बनाते हैं आजकल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट इज द रीजन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की वॉलनट इंडस्ट्री, यहाँ की एप्पल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है दिन ब दिन। व्हाई? बिकॉज हम लोग हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, और जो हम यूज करते हैं इनपुट्स, देखो क्या होता है, नुकसान क्या है, मतलब जिम्मेदार क्या है नुकसान। द रीजन इज इनपुट्स हमें देने हैं ताकि प्रोडक्शन रेट असल फंगिसाइड अटैक इसलिए, इंसेक्टिसाइड अटैक इसलिए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कार्सिनोजेनिक एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी कॉस्टली। डे बाय डे ये कॉस्टली होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस बात को मेंटेन करने में 1 लाख रुपया लगता था फॉर एग्जांपल 2 इयर्स बिफोर, आज उसमें 2 लाख लगते हैं। आने तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर 2 साल पहले 2 लाख आते थे, आज 2 लाख आएंगे नहीं। मान लीजिए 2 लाख आएंगे आज भी, लेकिन इट्स अ जीरो सम गेम, इसने तो कुछ कमाया नहीं, क्योंकि इसका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, एंड दैट इज बिकॉज हमने केमिकल इनपुट्स यूज किए, उसने क्वालिटी भी डिटीरियोरेट किया, प्लस उसके हमारा खर्चा भी ज्यादा आ गया। अब अगर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स हम देंगे तो हमारे आउटपुट में, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी वाइज तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा वो, क्योंकि हम एक कन्वेंशनल या केमिकली ग्रोन चीज को ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो उसके लिए इनफ है कि इट्स कॉस्ट विल राइज एज पर द इन्फ्लेशन। जितनी इन्फ्लेशन राइज हो रही है उतना उसका कॉस्ट भी राइज होता जाएगा, ठीक है। जो कल 50 रुपए में बिकता था 1 किलो, वो 5000 में बिकेगा अमेरिकन या यूरोपियन मार्केट में, प्रोवाइडेड ये ऑर्गेनिक होगा। तो हम ये चीज समझते हैं, हमारे मतलब फार्मर्स जो थे उनको ये समझाना ऑल टुगेदर वेरी डिफिकल्ट, वो लोग नहीं मानने वाले हैं ना। बट एज एकेडमिशियंस, एज रिसर्चर्स, आप लोग यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट इनिशिएटिंग द चेंज। कि इनपुट कॉस्ट हम बढ़ा रहे हैं, आउटपुट क्वालिटी डिटीरियोरेट कर रहे हैं, तो आउटपुट तो आना नहीं है, पैसे तो आने नहीं उससे। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन reduce the input costs and enhance the quality from moving from chemical to organic, और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हमारा ज्यादा पैसे में बिकेगा, ठीक है। सिंपल फंडा, कोई और कुछ नहीं करना है, बस यह है कि हम दे क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, ठीक है। उसी पे डिपेंड है कि हमारा मार्केट कशिप सूट क्या दो मार्केट में खत्म गसन, इनका वैल्यू नहीं रहा। इट इज बिकॉज अमेरिका के लोग फूल नहीं है, यूरोप के लोग फूल नहीं है, उनको पता है कि यार ये क्या करते हैं। इंडिया की अगर केमिकल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो वो कहाँ जा रहा है, तो वो तो खेतों में जा रहा है। और सबको पता है कि एप्पल्स आर एक्सक्लूसिव टू हिमाचल प्रदेश और एक्सक्लूसिव टू कश्मीर, वॉलनट्स आर एक्सक्लूसिव टू कश्मीर, वॉलनट्स आर एक्सक्लूसिव टू ईरान, एंड कैलिफोर्निया तो है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ बनता है, ठीक है।
this thing biotechnology से मुझे याद आया. Once I was in class, Dr. Wajahat was a professor of biotechnology in Sachdeva Srinagar coaching center. It was winters. ठीक है, मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तो डोनेट प्रोफेसर का क्या था एंड ही टोल्ड आपको क्या लगता है मैं अमेरिका के दोस्त को यहाँ से वॉल में भेजूंगा, उसके कैलिफोर्नियन एप्पल्स उससे 100 टाइम्स ज्यादा अच्छा और वो प्रेफर नहीं करेगा वही खाना. क्यों? बिकॉज उसको पता है कि ये कैलिफोर्निया का बनाया हुआ ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है. ठीक है, और ही हैज वैल्यू फॉर दैट. ठीक है, ओके. Global market is $133 billion. It's rising and believe me, $1 billion is not even easy to count. ठीक है, please keep all these things in mind because you are going to decide the future of this economy, this region, this university, most exclusively or particularly your families, your areas, or regions, or yourself at the very start. ठीक है, so keep an open eye on all these opportunities. If anybody of you has any question, please ask, or anybody wants any contact regarding anything, I'm always open. My contact details, or anybody wants this presentation as well, I have shared it with sir. आप ले सकते हैं, it's not copyrighted, I will not claim anything. ठीक है, it's something I would love to teach or deliver or speak in front of anybody else in the world. ठीक है, please have it, and if you have any questions, please give. Or I would like to take anything like any question or any concern or any feedback from you people. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Any question? क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन को छोड़िए, कोई जवाब? अच्छा, जस्ट अ मिनट प्लीज सर. मैंने इस प्रेजेंटेशन का टेल एंड देखा ना. अब इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट रखता हूँ. असाइनमेंट क्या है? जब आप घर जाओगे शाम को, यू विल यूज द गूगल. ठीक, यू विल सर्च कि दुनिया में सबसे ज्यादा फंगिसाइड और पेस्टिसाइड कौन सी कंट्री यूज करती है इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर. ठीक है, एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड, वेयर डज वी स्टैंड, वेयर डज जे.एंड.के स्टैंड. ये आप मुझे कल दोगे इन्फॉर्मेशन. ठीक है, डन. बिकॉज प्रकार से दिया व्हाट इज द पेस्टिसाइड फंगिसाइड रेजिड्यू ऑफ ओवर एप्पल, what is the fungicide pesticide residue of apple grown in any other part of the world. I mean to say even in the developed part. इससे पता है सुबह चाय चंद रोटी बिफोर टी मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है, डन. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. जाते जाते एक और चीज लाइक कभी भी because you people mostly will be going into research and stuff like that. अगर आपको कोई भी कोई पेपर वेपर पब्लिश करना होगा अमेरिकन किसी जर्नल में, रेप्यूटेड जर्नल में, इम्पैक्ट का पेपर, something like that, please don't hesitate to reach out. कभी भी कांटेक्ट कर लीजिए. ये नोट करो, आपके पेपर 2 अभी चल रहे हैं, लाइन में है तो ठीक है. ठीक है ना. यहाँ पे आपने जो बताया सारा it was related to waste. जो हमारी ट्रेनिंग है particularly it's about agricultural waste. Yes. जैसे कि agro food waste. Yes. So sir specifically आपका कोई वेंचर इस पे चल रहा है या इसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली जो आप इससे कर रहे हैं? To be very precise, first basic thing is whatever. See, I was mainly talking about organic waste, and agri waste or kitchen waste or food waste is organic in nature. तो उसी जो भी मैंने बोला फिर वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट्स बनाना, वो सारे किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ हम कर सकते हैं. Then, if you want to design a particular product, for example, आपको बनाना है कोई different type of compost, as in we call it bone meal or coco peat. ठीक है, coco peat का जो husk और agri waste जो भी है coco peat का है, that is what? That is from the coconut husk, and that is again organic waste. ठीक है. Now if you want to develop that as a product, you can use coco peat as a raw material, coconut husk as a raw material, grind it into pieces and convert it into coco peat compost. It will entirely be a different product. Similarly, there are other like sericulture वाले, उनको पता होगा ज़्यादा. Yes, sericulture वाले. ठीक है, उनके जैसे earthworm काम करते हैं वैसे worms भी काम करते हैं, और उस type of waste है, it always has an exclusive component और content जो इसी पर्टिकुलर वेस्ट से आएगा. ठीक है, एंड अगर आपको वो वाला प्रोडक्ट डेवलप करना होगा तो आप वही वाला वेस्ट यूज करें, बट इट इज ब्रॉडली ऑर्गेनिक वेस्ट. एवरी टाइप ऑफ वेस्ट इट इज ऑर्गेनिक, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर वी कैन
जो वैल्यू एडिशन का, आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्ली, जो वैल्यू एडिशन की मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी, अगर तो नेबरिंग पाम छु, ये घास छु, कुछ भी है, ट्विग्स है, जो भी फार्म यार्ड वेस्ट है, इसको द बेसिक थ्योरी इज कन्वर्टिंग इट इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाया, इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यू कैन SKUAST ने डेवलप किया है ट्राइकोडर्मा, ठीक है, SKUAST की अपनी इन्वेंशन है, वो अपनी टेक्नोलॉजी है, that species of trichoderma is most feasible for the environmental conditions of Kashmir। वो ट्राइकोडर्मा उसी बेसिक कंपोस्ट के साथ ऐड करेंगे और ये बन गई बायो फर्टिलाइजर, ये ट्राइकोडर्मा बन गया, ना कि ये कंपोस्ट रहा। एंड ट्राइकोडर्मा 1 किलो 500-600 में बिकेगा, ठीक है, कंपोस्ट 1 किलो 5 रुपया में बिकेगा। दैट इज द एक्सपोनेंशियल राइज इन द कॉस्ट, दैट इज व्हाट यू कैन डू विद एवरी टाइप ऑफ कंपोस्ट। बेसिक थ्योरी है, कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में, देन कोकोपीट होगा, बोन मील होगा, कुछ और होगा, एग्री वेस्ट होगा, फार्म यार्ड वेस्ट होगा, शीप एक्सक्रीटा होगा, काउडंग होगा, जो भी होगा, या वर्मी कंपोस्टिंग होगा, इट्स ऑल रिलेटेड दैट, ठीक है। Are those fertilizer composts like suitable for particular kind of plantations or all type? I'll tell you, technically speaking, आपको मे बी फ्यूचर में ज्यादा गाइड करेंगे। ट्राइकोडर्मा इज समथिंग विच प्रिवेंट्स रूट रॉट, ठीक है, तो हर प्लांट में रूट्स होते हैं, ठीक है, हर प्लांट में रूट रॉट लगने का खतरा होता है। ट्राइकोडर्मा इज समथिंग विच कैन एक्ट ऑन एनी टाइप ऑफ प्लांट, एप्पल ट्रीज, हाई डेंसिटी, कन्वेंशनल, जो नॉर्मल किचन गार्डन्स, वार्डन पार्डन है, कोई कोई तरह। एंड कंपोस्टिंग एक बेसिक क्वालिटी है ना, इट्स समथिंग यूनिवर्सल डोनर, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि कंपोस्टिंग एक्ट एज अ बेस फॉर योर प्लांट, ठीक है। It has water retention capacity, it has proper organic content of 23 to 25%, it has balanced pH of 7.5 to 8 or maybe 6.8 to 7.8 in that range, which is neutral, not acidic, not basic, and it has sodium, potassium and calcium in that ratio which is most beneficial for the plants, for any plant to grow, and it will act as a foundation material, base material for any plant to develop roots और होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है। और सबसे अगर किसी को आज के टाइम पे एडवाइस देना होगा कि कंपोस्ट का यूज करें, दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूज कंपोस्ट, क्योंकि इससे जो इसमें जो कंटेंट होता है ड्यूरिंग दिस हाइबरनेशन पीरियड वो सॉइल में चला जाता है, फिर जब मार्च में जब प्लांट्स को ग्रोथ करने की जरूरत है तब इनको चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल में एब्जॉर्ब हुए होंगे तो दे विल बी अबंडेंट इन देम। अदरवाइज उस टाइम पे करेंगे तो नेक्स्ट 2 महीने के बाद उसका असर आएगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर नहीं है। इसे साइंटिफिक एडवाइस कि किसी को बताना होगा को आज दिस इज द बेस्ट सीजन, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? लव दैट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Ahmed sir, as a gift of थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो you gave them the depth knowledge कि वेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आई होप आपने पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। Thank you so much. We will utilize all those processes in the future. Hopefully. Yeah. Thank you so much. Anybody would like, I would like to have 4, I think